So today we will discuss a class named as JTabbed Pane. Just see, a component that lets the user switch between a group of components by clicking on a tab with a given title or icon. बेटा इसकी वर्किंग में आपको दिखाऊंगा. So let me show you the constructor, blank constructor, टैब प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल भी है बेटा, वर्टिकल भी है. दो पॉसिबिलिटीज मेरे पास है, मतलब राइट लेफ्ट. आई विल शो यू द थिंग्स. लेआउट पॉलिसी. So beta, let me show you the one important method of this class. That is very important. We will see in the future. Get tab placement and get layout policy, set layout policy, set selected index, that is very important. Insert tab, that is very important. Insert tab. So what will happen? That is title, that is icon, that is component, string and index. So let me show you one more method with the same name. Just see, add tab. Same. Getting or not? Again, same. So let me start the things. बेटा आपको मैं टूल्स प्रोवाइड करा रहा हूँ. जो क्लासेस के नाम मैं आपको बता रहा हूं वे क्या है बेटा? दे विल वर्क एज अ टूल. आपको बेटा उन टूल्स का यूज करके क्या करना है? आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है. सो इन अ फ्यूचर वी विल सी हाउ टू मेक अ प्रोजेक्ट, बट फॉर अ पर्टिकुलर मोमेंट लेट मी लव द थिंग्स. तो बेटा एक फ्रेम मेरे पास है, उस फ्रेम का साइज, लेआउट एंड बैकग्राउंड. बेटा मैंने एक जे इंटरनल फ्रेम लिया. जे इंटरनल फ्रेम F1 इक्वल्स न्यू जे इंटरनल फ्रेम. ठीक है बेटा. So I have taken 5J internal frames. So they are 5, 2, 3, 4 and 5. So let me set the size. F1 dot set size 300. So let me set the size for second, for third, for fourth and for fifth. That is 400 and 400. Let the next one 300 and 350. Next one like 400 and 450. In last, let's say 500 and 500. Along with size, let me define the color as well. F1 dot set background. That is background. So let me set the background new color. It is almost black. So let me set color for all the domains like. So I will write here F2, F3, F4, F5. Along with this I am going to change the color. Let's say 100, 100, 100.
let's say 10, 100. So I am picking different colors. Getting or not? 100, like that's it. So there are 5 different colors, 5 different J internal frames. Now I am going to make the object for J tab pen. Along with this, I am going to add this one, this dot add T. So I have add J tab pen on a frame. Let me set the bounds. T dot set bounds 10, 30, 600 and like 600. Then T dot add tab, this one. I am going to use this one, add tab. So let's see, I am using this one, add tab. So first parameter is what? A message, let's say first, and second the name of component. So let's say F1, J internal frame. So I am adding 5, that is second, that is third, that is fourth, that is fifth. So let me change the tabs like F3, F4 and F5. So let me run the program. Let's see, that is tab pen, that is my first tab, second tab, third tab, fourth tab and fifth tab. So beta, according to the tab you can define different working. तो बेटा ये आपके प्रोजेक्ट में बहुत काम आएगा. लेट्स से आपको डिफरेंट टैब्स लगाने हैं, डिफरेंट वर्किंग परफॉर्म करनी है. यू कैन टेक हेल्प ऑफ J टैब पेन. समझ गए आप? You can take help of J tab pen. So you can apply, listeners, you can apply things on like text area, text field on different components. So let me show you one more classes of swings, not AWT, like swings, like or not this one, like so let me show you one more classes. So just see, that is J password field. It is one of the important classes. So let me show you the class. J password field is a lightweight component that allows the editing of a single line of text where the view indicates something was typed but does not show the original characters. Just see, most important, this one. Getting or not? बेटा जो पासवर्ड की वर्किंग है आपको कुछ वो वर्किंग दिखाई देगी. समझ रहे हैं आप? कुछ टाइप तो होगा लेकिन टाइप क्या हुआ आपको वो दिखाई नहीं देगा. दैट इज कंस्ट्रक्टर. बेटा ये करेक्टर है जो आपको शो करना है. सो लेट मी स्टार्ट द थिंग्स. I am going to design the program for you. So let me rough.
General frames. Along with this, let me rub the working of tab pane. This one. So I have taken J password field. J password field. J1 equals new J password field. Getting? Let me set the bounds for this one. So I will write J1 dot set bounds 10, 30, 150. This dot add J1 dot set echo char. तो बेटा आप कुछ भी टाइप करें आपको क्या दिखाई देगा, लेट्स से स्टार. सो आप कुछ भी टाइप करें आपको शो क्या होगा, स्टार. लेट मी शो यू द आउटपुट. Set echo char. Oh, that is not strings. In fact, that is character. So please put it in a single quotes, not double quotes. Compile. Then let me run the program. That's it. It is what, star. And then let me get the value. So that is set echo char. Oh, just see, get text. See, get text. Return the text containing in this text component. Very important beta. So let me apply the event J1 dot add focus listener. बेटा एक बार मैं आपको फोकस लिस्नर दिखा दूं. न्यू फोकस अडेप्टर. ठीक है बेटा, दैट इज फोकस लिस्नर. एंड पब्लिक void focus lost, like focus event like F1. तो बेटा जैसे ही फोकस लॉस्ट होगा F1 इवेंट क्या हो जाएगा बेटा, फायर हो जाएगा. सो void F1 system.out.println. जो आपने टाइप किया है बेटा उसको प्रिंट करा देते हैं. लेट मी कंपाइल. expected or this one like expected. Oh, something is or at the last. That is not Ji, that is J1. Compile. Let me run the program. Just see बेटा मैंने टाइप किया अंकित शर्मा. बेटा जैसे ही फोकस इससे दूर जाएगा इवेंट फायर हो जाएगा. Just see, I am going to but let me design. Just see, event is been fired. बेटा जैसे ही कंट्रोल इससे दूर जाएगा फोकस लॉस्ट इवेंट क्या हो जाएगा बेटा, फायर हो जाएगा. सो दैट इज द वर्किंग ऑफ जे पासवर्ड फील्ड. इन द नेक्स्ट क्लास we will see some more concepts of strings. Thank you.